बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज एवरेज कॉस्ट, ईसी एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। AC is equal to TC divided by Q. Hence AC is equal to average cost. TC is equal to or means total cost. Q means quantity of output. In table 3, total cost of producing 6 units of a commodity is rupees 48. टेबल 3 हमने कल का जो लेक्चर था उसमें टेबल 3 पे आप जाएंगे, वो देखिए आप। वहां जब 6 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स of a commodity is rupees 48. Accordingly, cost per unit or average cost will be, that is rupees 48 divided by 6, that is rupees 8 per unit. Average cost is the cost per unit of output produced. It is also called unit cost of production. इसको हम यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी पुकार सकते हैं, कह सकते हैं इसको। नाउ टेबल 4 हमारे पास है। टेबल 4 illustrates the estimation of AC means average cost. When TC is given, TC means total cost is given. This is table 4, TC and AC. आउटपुट इन यूनिट्स पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है टीसी मींस टोटल कॉस्ट, तीसरा कॉलम है एसी मींस एवरेज कॉस्ट। तो आउटपुट जब 0 है इन यूनिट्स, उस वक्त टोटल कॉस्ट जो है दैट इज रुपीज 10। तो एवरेज कॉस्ट हो गया 10 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। जब आउटपुट 1 यूनिट आता है तो टोटल कॉस्ट है 20 रुपीज। इट इज 20 डिवाइड बाई 1, दैट इज 20। जब आउटपुट 2 रुपीज है, टोटल कॉस्ट है 28। इट इज 28 डिवाइड बाई 2, दैट इज 14 AC। 3 जब आउटपुट है यूनिट्स, टोटल कॉस्ट है 34। तो एवरेज कॉस्ट बनता है 34 डिवाइड बाई 3, इट इज 11.3। द आउटपुट है 4 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट इज 38, एवरेज कॉस्ट इज 38 डिवाइड बाई 4, दैट इज 9.5। जब आउटपुट है 5 यूनिट्स, total cost is 42, average cost is 42 divided by 5, that is 8.4. Output is 6 units, total cost is 48, average cost means AC is 48 divided by 6, that is 8. Now फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ AC। हम बात करेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ AC की। एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आई विल रिपीट इट। एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज AC is equal to AFC plus AVC. Here AC is equal to average cost, AFC is equal to average fixed cost, AVC is equal to average variable cost. Now average fixed cost पे हम बात करेंगे। average fixed cost
is the fixed cost per unit of output. Average fixed cost is the fixed cost per unit of output. AFC means average fixed cost is equal to TFC means total fixed cost divided by Q. Here AFC is equal to average fixed cost, TFC is equal to total fixed cost, and Q is equal to quantity of output. Now, table 5 and figure 4 illustrates the behavior of AFC, average fixed cost. This is figure 4 and that is table 5. It shows us when 1 unit is produced, the average fixed cost is rupees 10. When 5 units are produced, then average fixed cost is rupees 2. Average fixed cost goes on diminishing as output increases. Now, this is figure number 4. This is x-axis, y-axis. X-axis shows us output in units, y-axis shows us average fixed cost in rupees. This is AFC, average fixed cost curve या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको कहेंगे हम. तो AFC is rectangular hyperbola. It shows number 1, ये फिगर हमें बताती है number 1 that AFC, average fixed cost, decreases as output increases. Number 1. Number 2, AFC, average fixed cost multiplied by Q at any level of output is the same because AFC multiplied by Q is equal to TFC, total fixed cost, which is constant at all levels of output. Thus, 4 multiplied by 2.5 is equal to 10. 8 multiplied by 1.25 is equal to 10. अब टेबल 5 पे हम जाएंगे. आउटपुट पहला कॉलम है आउटपुट यूनिट्स, दूसरा कॉलम है फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीस, तीसरा कॉलम है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीस. तो आउटपुट पे हम जाएंगे पहले. जब एक यूनिट आउटपुट है 1 यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 रुपीज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 रुपीज. जब आउटपुट 2 यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 रुपीज और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 5 रुपीज. जब आउटपुट 3 यूनिट्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट 10, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 3.3. जब आउटपुट 4 यूनिट्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपीज है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 2.5. Output is 5 units, fixed cost 10 rupees, average fixed cost is 2. 6 units है output, 10 rupees है fixed cost, 1.67 है average cost, average fixed cost. जब 7 units हैं output, fixed cost है 10 rupees, 1.42. 8 units हैं output, fixed cost at 10 rupees, average fixed cost is rupees 1.25. Now, यहां हम देखेंगे in figure 4, AFC shows average fixed cost shows. AFC shows average fixed cost. This curve
slopes downwards to the right. ये कर्व जो है ये डाउनवर्ड की तरफ आती है, राइट की तरफ. दिस इज द कर्व, राइट की तरफ आ जाती है. Downward slopes of AFC, this AFC shows that AFC decreases as output increases. जो ही आउटपुट में इजाफा होता है तो ये कर्व जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये डिक्रीज हो जाती है. इट डिक्रीजेस. It is important to note that AFC curve is a rectangular hyperbola. It means that AFC multiplied by Q, which is equal to TFC, is constant at all levels of output. Now, AFC curve is rectangular hyperbola. If we take any point on AFC curve and multiply AFC at that point with the corresponding level of output, the product AFC multiplied by output is equal to TFC shall always be the same. This shows that total fixed cost remains constant at all levels of output. तो आज इतना ही है. थैंक यू.